Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे सेंट्रल कॉनिकॉइड्स के, जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट है। पहला एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन to the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1, which are parallel to the plane lx plus my plus nz is equal to 0. इक्वेशन ऑफ ellipsoid गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन parallel to the plane this, which is this one, we can write that as lx plus my plus nz is equal to p, means this one and 3. So 2 and 3 are parallel to each other, and if the plane, this plane touches the ellipsoid 1, then we have condition of tangency, in which we had written that p square is equal to a square l square plus b square m square plus c square n square. So condition of tangency हमने ये find out की थी. Condition of tangency ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में पहले वीडियो में. So p will be under root of this और ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट प्लेन्स की. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ lx plus my plus nz is equal to plus minus, this will be plus minus under root a square l square plus b square m square plus c square n square. यही हमारा आंसर है. सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन्स to the hyperboloid two x square minus 6y square plus 3z square is equal to 5, which pass through the line थ्री एक्स माइनस 3y plus 6z minus 5 is equal to 0 is equal to x plus 9y minus 3z. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड को हम सिंप्लीफाई करके लिखें. दिस इज 2x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल प्लस 3 अपॉन 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So let's say this is equation 1, these are equation 2, and this is 3. The equation of any plane through the line 2 will be
this will be that P1 plus lambda P2 is equal to 0. So P1 3x minus 3y plus 6z minus 5, 3x minus 3y plus 6z minus 5 plus lambda x plus 9y minus 3z is equal to 0. So we collect the terms 3 plus lambda coefficient of x plus coefficient of y and coefficient of z, 6 minus 3z, 3 lambda into z is equal to 0. If the equation 4 touches the hyperboloid, then what will be the condition? Condition will be L square upon A plus M square upon B plus N square upon C is equal to P square. Equations are here 3 plus lambda into x plus minus 3 plus 9 lambda into y plus 6 minus 3z into 3 lambda into 3 lambda into z is equal to 5. So this is Lx plus My plus Nz is equal to P, where P is 5, L is 3 plus lambda. So we substitute there, M is this value, N is this value, and A is from the equation, which is the equation of hyperboloid, 2 upon 5 x square plus 6 upon 5 y square plus 3z square upon 5 is equal to 1. Here this equation with ax square plus by square plus cz square is equal to 1. A is equal to 2 upon 5, B is equal to minus 6 upon 5, and C is equal to 3 upon 5. This is with minus. So we will put these values in this equation. L is equal to 3 plus lambda, so 3 plus lambda whole square upon A. A is 2 upon 5 and B is minus 3 plus 9 lambda whole square upon B. B is minus 6 upon 5 plus 6 minus 3 lambda whole square upon C, 3 upon 5. This is equal to P square. P is equal to 25 square. 5 square, that is 25. We simplify this. It comes 5 upon 2, 9 plus lambda square plus 6 lambda, then minus 5 upon 6, 9 plus 81 lambda square, then minus 54 lambda plus 5 upon 3, 36 plus 9 lambda square minus 36 lambda is equal to 25. So here we have 5 everywhere, so this is this much. Now we write it by taking LCM. 6 into 3, LCM of 6, 2 and 3. So this comes 6, and here we can write 3, 9 plus lambda square plus 6 lambda
minus 9 plus 81 lambda square minus 54 lambda, then plus 2 into 36 plus 9 lambda square minus 36 lambda is equal to 5. So cross multiply will give 30, and on left hand side it is 27 lambda square plus lambda minus 9 plus 81 lambda square plus 54 lambda plus 72 plus 18 lambda square minus 72 lambda is equal to 30. We see that we can cancel out. Here we have 18 lambda, 54 lambda and 72. So 54 and 18 is 72. So this cancels out. And now we add this 27 minus 9 plus 72. So this becomes 90, and lambda square is 3 lambda square, 81 with minus sign and 18 with plus sign. So minus 81 and plus 21 lambda square. So 90 minus 81 with, so we can write this is with minus sign. So minus 81 plus 21 is equal to 60 minus sign. So lambda square is equal to, so this gives lambda square is equal to 1, because 60, when we bring it, both are 60. 60 minus 60 lambda square gives lambda square is equal to 1. So lambda is plus minus 1. So we get the equation, required equation. First is when lambda is equal to plus 1, it comes 4x plus 6y plus 3z. We are substituting the value of lambda as 1. This gives 2x minus 12y, and for z it will be plus 9z is equal to 5. These are the required equations. Next example is a tangent plane to the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 meets the coordinates axis in the points P, Q and R. Prove that the centroid of the triangle PQR lies on the surface a square upon x square plus b square upon y square plus c square upon z square is equal to 9. So here ellipsoid is given, this one, which is equation 1.
So we can draw an ellipsoid. Let's draw ellipsoid and see the 3 points PQR. We take 3 points P here, Q on y-axis and R on z-axis. We join these 3 points and just midpoint of this. So equation of tangent plane, which we have studied in previous video, will be x1 upon a square plus y1 upon b square plus z1 upon c square is equal to 1. Now we take points PQR and find out their coordinates. These are the coordinates. When we put y0, z0 in this equation, we get x1 as a square upon x1. Similarly, when we put x and z0, we get value of y, value of x and y0, we get value of z. Now we say centroid of triangle PQR is alpha, beta, gamma. Then value of alpha will be a square upon x1 plus 0 upon 3. So this becomes a square upon 3 x1. So alpha will be in this form of x1, and we can find out x1 from here. X1 will be a square upon 3 alpha. Similarly, beta is b square y1 upon 3. So y1 will be b square upon 3 beta, and gamma is c square upon z1 upon 3. So this gives z1 is equal to c square upon 3 gamma. Now we know this point x1, y1, z1, they lie on of ellipsoid also, so it will satisfy that. So we can say x1 square upon a square plus y1 square upon b square plus z1 square upon c square is equal to 1. So this becomes, if you put values of x1, it comes a to the power 4 9 alpha square a square plus b to the power 4 upon 9 beta square upon b square plus c to the power 4 upon 9 gamma square upon c square is equal to 1. When we simplify this, it gives a square upon alpha square plus b square upon beta square plus c square upon gamma square is equal to 9. And when we take locus of alpha, beta, gamma, in place of alpha, beta, gamma we put x, y, z, we get the given equation with here. Next question है, tangent planes are drawn to the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1. So equation 1 mark कर लिया इसको. Through the point alpha, beta, gamma, point given है, prove that the perpendiculars to them, to the tangent planes from the origin generate the cone this. Also show that reciprocal cone of the above cone is this. Hence show that the tangent planes envelop the cone this. So एक
फिगर बना लेते हैं। सपोज ये एक एलिप्सॉइड है, इस पर एक टेंजेंट प्लेन है, ओरिजिन ये है इसका, एक्स एक्सिस वाई जेड एंड वाई विल बी हेयर। सो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमें पता है एंड दिस इज ओरिजिन। So when it says tangent planes are drawn to conicoid, this is the tangent plane drawn to the conicoid through the point alpha beta gamma. Suppose this point is alpha beta gamma. Prove that the perpendiculars to them from the origin. So यहाँ से ये perpendicular draw हो रहा है. So this is the perpendicular. Generate the cone. So ये जो सारे का लोकस ले लेंगे तो वो कोन जनरेट हो जाएगा, और रेसिप्रोकल भी है, वो भी कोन है, एंड टेंजेंट प्लेन्स एनवलप द कोन। सो 3 पॉइंट है यहाँ। अल्फा बीटा गामा पॉइंट दिया गया है, इससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये इक्वेशन होगी जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये प्लेन के चैप्टर में हमने पढ़ा है, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो गई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। रेस्ट टर्म्स राइट हैंड साइड में ले गए। दीज आर द टर्म्स एंड दिस हैज बीन डिनोटेड बाय 2। नाउ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हमने ये डिराइव, अगर कोनिकॉइड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और प्लेन दिया गया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, तो यहाँ से हमें कंडीशन फाइंड करनी थी कि प्लेन जो है में टच द सेंट्रल कोनिकॉइड। तो वो कंडीशन आती है एल स्क्वायर अपॉन ए। सो दिस कंडीशन विल बी, सो दिस इज द कंडीशन दैट टेल्स दैट ये प्लेन एल एक्स प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी टच कर रहा है कोनिकॉइड को, एंड that is L square upon A plus M square upon B plus N square upon C is equal to P square। और P की वैल्यू जो है L x plus M y plus N z, ये वैल्यू जो है P के इक्वल हो गई, सो सब्सटीट्यूट कर दी। नाउ जैसे कि यहाँ पर बताया कि ये जो टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ की है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओरिजिन से टेंजेंट प्लेन पर, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये लाइन जो है पास हो रही है ओरिजिन से, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, तो दैट इज इक्वल टू लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो वैल्यू हो जाएगी x upon L is equal to y upon m is equal to z upon n। Eliminate lmn from the equations। कौन कौन सी इक्वेशन से? from the equations, एक तो है l स्क्वायर अपॉन a प्लस m स्क्वायर अपॉन b प्लस n स्क्वायर अपॉन c is equal to L alpha plus M beta plus N gamma whole square, and x upon L is equal to y upon M is equal to z upon n is equal to r। इन दोनों इक्वेशन से हम एलिमेंट को, सो इफ वी सब्स्टिट्यूट L is equal to आर अपॉन एक्स, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है एंड इस साइड भी स्क्वायर है, सो आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो डायरेक्टली हम जहाँ पर एल है वहाँ एक्स सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जहाँ वाई है वहाँ एम एंड जेड की प्लेस पर एन। सो जस्ट सब्सटीट्यूट एल एम एन इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड होल स्क्वायर। सो ये इक्वेशन ए है जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है कोन की, जो क्वेश्चन में दिया गया है। सो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ कोन। सेकंड पार्ट इसका है कि हमें रेसिप्रोकल
ऑफ इक्वेशन ए फाइंड करना है. सो रेसिप्रोकल कोन ऑफ द इक्वेशन ए, मान लेते हैं वो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. ये कोन के चैप्टर में करा जाएगा जो अभी हमने किया नहीं है. एफ वाई जेड प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, वेयर a is equal to bc minus f square and b is equal to ca minus g square, c is equal to ab minus h square, f is equal to gh minus af, g is equal to hf minus bg and h is equal to fg minus ch. सो यहाँ ए बी सी डी एफ जी एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ए इज इक्वल टू बी सी माइनस एफ स्क्वायर. सो बी है, हमें एक्चुअली जो कोन की इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. कोन की इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, ये कोन की इक्वेशन होती है. तो इसीलिए हमने ये रेसिप्रोकल लिया जहाँ ये ए बी सी कैपिटल्स हैं और उनमें ए बी सी की वैल्यू है. अब जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हमें ओपन करके लिखना होगा टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. सो जो हमारी इक्वेशन है दैट इज ए, वी वांट टू ओपन इट. सो लेट्स राइट हियर, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर कॉमन लिया. सो फ्रॉम हियर अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई बी प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी 2 अल्फा बीटा एक्स वाई, और वी कैन राइट 2 बीटा गामा वाई जेड प्लस 2 गामा अल्फा जेड एक्स प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सो ए इज इक्वल टू बी सी, बी इज बीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई बी इंटू सी गामा स्क्वायर माइनस 1 बाई सी माइनस एफ स्क्वायर. एफ इज कोफिशिएंट ऑफ yz. So this is beta gamma square. Simplify it, it comes beta square upon c plus gamma square upon b plus beta square gamma square. It will be with minus sign plus 1 minus bc and minus beta square and gamma square, that is this. So this will cancel out because this and this makes plus and this, so ultimately we get minus बीटा स्क्वायर अपॉन सी प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी सी.
A is equal to. Now we can take LCM of this. LCM is BC. We multiply it by A, so A here, minus sign is there, and B beta square plus C gamma square minus 1. And if we want to write A alpha square, we will multiply it by alpha square. So A alpha square is equal to minus A alpha square into B beta square plus C gamma square minus 1 upon ABC. AX स्क्वायर अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बी सी. So we write it minus a x square then a alpha square. ये टर्म ऐड कर ली और यही टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर माइनस 1. एंड बिकॉज हमने a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस टर्म के साथ किया है, so if we take it like this, then this will be minus a square alpha square x square upon ABC. और इसी तरह से हम बी वाई स्क्वायर एंड सी जेड स्क्वायर को सिमिलरली लिख लेंगे. सिमिलरली बी वाई स्क्वायर एंड सी जेड स्क्वायर को लिख लेंगे. एफ इज इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ. सो दिस विल बी गामा अल्फा अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एंड बीटा गामा. सो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा वी मल्टीप्लाई, देन माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस this and this plus beta gamma upon a. So this is equal to beta gamma upon a. And इसी तरह similarly g is equal to gamma alpha upon b and h is equal to alpha beta upon a. नाउ ये सारी वैल्यूज़ को हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली गई है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अब ये हुआ माइनस 1 अपॉन ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा वाई जेड
अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 गामा अल्फ़ा ZX अपॉन B अपॉन B प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन C इंटू XY इज इक्वल टू 0। सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं दिस इक्वेशन, सो दिस कम्स ABC LCM हो गया, सो AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, बिकॉज ये टर्म कॉमन है तीनों में, सो AX स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर एंड A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर माइनस 1 minus these terms A square alpha square X square plus, because minus common ले लिया, plus B square beta square gamma square plus C square gamma square Z square. Now the remaining terms are these terms, and अगर ABC हमने LCM ले लिया तो इसमें न्यूमरेटर में BC से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर AC से, एंड इन दिस AB से, सो वी विल मल्टीप्लाई, सो दिस बिकॉज ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो दिस इज बिग ब्रैकेट, सो दिस विल बी नाउ विद माइनस साइन, माइनस 2 BC बीटा गामा YZ minus 2 CA gamma alpha ZX and minus 2 AB alpha beta XY is equal to 0. एंड हम ये लास्ट टर्म को अगर देखें, सो दिस इज बिकमिंग परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस गिव्स AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म माइनस है तो इसे राइट हैंड साइड ले गए, एंड ये परफेक्ट स्क्वायर भी है A अल्फा X प्लस B बीटा Y प्लस C गामा Z का, सो होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if 2r is the distance between two parallel tangent planes, to the ellipsoid x square upon A square plus Y square upon B square plus Z square upon C square is equal to 1. Prove that a line through the origin perpendicular to the planes lies on the cone. X square A square minus R square plus Y square B square minus R square plus Z square C square minus R square
is equal to 0. So ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है. 2r अगर ये एलिप्सॉइड है, एक टेंजेंट प्लेन ये है, एक टेंजेंट प्लेन ये है. These two are parallel, two parallel tangent planes, and distance between these two is 2r. So अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है, मान लीजिए हम ऐसे टेंजेंट प्लेन लें, because these are parallel, so we can have a line which is passing through origin. So this is origin, so the same distance, this is also 2r. So ये जो लाइन पास हो रही है थ्रू ओरिजिन, ये प्रूव करना है. दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन्स एंड इट लाइज ऑन द कोन, एंड दिस इज द कोन. सो एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमें दी गई है एक. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स, इक्वेशंस ऑफ द टू पैरेलल टेंजेंट प्लेन्स. To the ellipsoid, 1r lx plus my plus nz. क्योंकि ये पैरेलल हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट हम लेते हैं, तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस. ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर. वन विद प्लस, another is with minus. And distance between these two tangent planes is 2r. It is given in the question. So we draw a perpendicular from origin. This is perpendicular from origin to the tangent plane. Write down the distance from the origin. So if we want to calculate this distance plus this distance, this is perpendicular from origin to this plane and to this plane. So we have to find out the difference between these two. So when it is minus, when we put equal to b, if point is there, we say ax1 plus by1 plus c z1 minus d upon under root a square plus b square plus c square. But here it will be 0 0 0, so because it is from origin, so this under root a square l square plus b square, this is distance, b square m square plus c square n square, and again it will be minus minus plus for second half, 1 and 1, and upon will be under root l square plus m square plus n square. x1 y1 z1 is 0 0, and then again, as I said, minus minus plus, so a square l square plus b square m square plus c square n square upon root l square plus m square plus n square, and this is given equal to 2r. So 2 will come because these are same, so r is equal to a square l square plus b square m square plus c square n square upon under root l square plus m square plus n square. And if we cross multiply and square it, it comes a square l square plus b square m square plus c square n square is equal to r square into l square plus m square plus n square. We collect the terms of l square, m square and n square, and then take
the first L square A square plus B square M square minus R square plus C square N square minus R square is equal to 0. Now the equation of the line through origin and perpendicular to the planes, as we did in the previous question, equations of the perpendicular to the planes, to the tangent planes, and passing through origin. Is x upon L is equal to y upon m is equal to z upon m. पिछले क्वेश्चन में भी किया है. अब इसमें से और इसमें से हम एलिमेंट को भी एलिमिनेट. It means what are we doing? In place of L we are putting x, in place of B this is m square, this is n square. Now equation of the line passing through the origin and perpendicular to the tangents is x upon L is equal to y upon m is equal to z upon n, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में we did it. So we eliminate element from this and this equation. So what we do, we put in this equation, in place of L, M, N, we put x, y, z respectively, and we get the equation which is given in the question. So that is what we had to do. Next example है, show that the tangent planes at the extremities of any diameter of an ellipsoid are parallel. So equation of ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1. And center of the ellipsoid जो है origin होता है, ये known है हमें. And every line which is passing through origin through 0 0 0 and intersecting the ellipsoid one वो diameter होगी, that is the diameter. Passing through the origin and intersecting the ellipsoid is a diameter of the ellipsoid one. So equation of diameter क्या होगा? ये सेम ही होगा जैसे हमने कहा, क्योंकि इक्वेशन passing through origin is x upon L is equal to y upon m is equal to z upon n, and intersecting the ellipsoid means some tangent plane will be there, so this is this line. So this equation is same as we did in the previous questions. Now let's say this is equal to r, so we can have x is equal to LR,
y is equal to mr and z is equal to nr. And suppose this point which is on this line, line 2, on line 2, if this point, if xyz, say P point, this is P point, it lies on equation 1, then what will happen? This will satisfy equation 1. So we substitute LR square plus MR square, whole square we will write M square R square on B square plus N square R square upon C square is equal to 1. So from here what we get? R value. R is equal to plus minus 1 upon L square upon A square plus M square upon B square plus N square upon C square. We call it, say, lambda, plus minus lambda, just for short value. It means x is equal to L lambda, y is equal to M lambda and z is equal to n lambda. ये point हो गया. This is the point P. अगर ये एक एक्सट्रीमिटी है डायमीटर की तो अनदर होगा this is one of the extremities है, so another one will be minus L lambda minus M lambda and minus N lambda, be this one. Now this is a point and we want to find out equations of tangent planes to 1 at these points. So as we know that in place of x we write x1 plus y1 plus, so wherever x1, so the equations of tangent planes at point, this is P, so we call it P1 and this is P2. At P1 and P2 are, wherever x we will replace it by x1, wherever y replace it y1 and z1 respectively. So this becomes L lambda x upon A square plus M lambda upon B square y plus N lambda z upon C square is equal to 1. And when we have minus, this will give us so from here we can write down lambda is common, Lx upon A square plus My upon B square plus Nz upon C square is equal to 1 upon lambda. And in the case of minus, this will be minus 1 upon lambda. Rest will be same on left hand side. It becomes Lx square plus My upon B square plus Nz upon C square is equal to minus 1 upon lambda. So these are the two parallel planes. These are the equations of, so this is B
and this is A. A and B are two equations of parallel planes. यही हमें निकालना था. Next example. If the line of intersection of perpendicular tangent planes to the ellipsoid, whose equation referred to rectangular axis is this, passes through the fixed point 0, 0k, show that it lies on the cone. If the line of intersection of perpendicular tangent planes to the ellipsoid refer to rectangular axis is x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1, passes through the fixed points zero zero k, show that it lies on the cone x square b square plus c square minus k square plus y square c square plus a square minus k square plus z minus k whole square So equation of ellipsoid is given x square upon a square y square upon x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1. And equation of any plane which passes through the point 0, 0k So equation of the plane which passes through 0, 0k will be L x minus 0 plus m y minus 0 and m z minus k is equal to 0, or we can write down Lx plus my plus nz is equal to nk. Now if this plane 2 touches the ellipsoid, then we have the condition if equation 2 touches the equation 1 of ellipsoid. So a square L square plus b square m square plus c square n square is equal to n square k square.
this is the case where Lx plus My plus Nz is equal to P type situation. Then we have this condition that A square L square plus B square M square plus C square N square is equal to P square. Now we write it taking this term on left hand side. So this is equation 3. If we want to see figure, ये कुछ इस तरह की फिगर होगी कि एलिप्सॉइड है, ये एक टेंजेंट प्लेन है एंड दूसरा एक परपेंडिकुलर टू दिस. So perpendicular to this will be, which is here, this will be perpendicular to this. These two planes are perpendicular to each other. Suppose this sort of figure. So when we are intersecting two planes, तो जैसे बुक में हम देखते हैं कि दो प्लेन अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं, वी सी इट जनरेट्स ए लाइन, ये एक लाइन आ जाती. इसी तरह यहाँ पर ये एक प्लेन है, जैसा कि ये एक टेंजेंट प्लेन है और ये एक टेंजेंट प्लेन है, और ये लाइन जो है ये पास हो रही है पॉइंट 0 के से, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी है. दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पासिंग थ्रू 0 के. क्योंकि हम इसका अगर ड्रॉ कर लें x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, सो वी कैन सी इट इज k एंड 0. तो ये प्लेन भी इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये लाइन भी, इंटरसेक्टिंग लाइन भी इसी पॉइंट से दिस पॉइंट पास हो रही है. दिस पॉइंट. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. Lx माइनस 0 प्लस My माइनस 0 प्लस Nz माइनस k इज इक्वल टू 0. एंड ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गई, जिसमें अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ये इक्वल टू P के इक्वल है. एंड ये इक्वेशन 2 अगर टच कर रही है एलिप्सॉइड को, तो ये इक्वेशन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से ऑब्टेन हो गई. दिस इज P स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो ये इक्वेशन आ गई, जिसे 3 से डिनोट किया. अब प्लेन की इक्वेशन तो नोट हो गई, तो लाइन की इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 0 के, तो इक्वेशन अगर हम मान लें लैम्डा म्यू न्यू इसके एलसीएम्स हैं, सो डीसीज हैं, तो x माइनस 0 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन म्यू इज इक्वल टू z माइनस k अपॉन न्यू. तो ये 4 इक्वेशन वी से let's it is equal to r. So x upon lambda is equal to y upon mu is equal to z minus k upon nu is equal to r से. So यहाँ से पॉइंट आ गया, x is equal to lambda r, y is equal to mu r and z is equal to nu r plus k. ये पॉइंट इलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड टेंजेंट की इक्वेशन को भी, इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, दिस इक्वेशन को. सो इसमें ये वैल्यूज रख देते हैं. सो वी से लेट्स r इज इक्वल टू 1 वी कैन एज्यूम, और r वी कैन टेक कॉमन लेटर ऑन. सो वी कैन टेक कॉमन ऑल्सो L
L lambda x L lambda r plus m mu r plus n nu r plus k इज इक्वल टू एन के. सो ये एन के कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. सो रिमेनिंग जो इक्वेशन है एल लैम्डा प्लस एम म्यू प्लस एन न्यू इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ गई. नाउ डीसीज जो हैं ऑफ द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन of the normal to the tangent plane and tangent plane की इक्वेशन क्या है lx plus my plus nz इज इक्वल टू nk. और DCs क्या हैं l m n. ये DCs हैं ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन. दिस टेंजेंट प्लेन ये रिलेटेड हैं दो इक्वेशन से. एक इक्वेशन तो है एल लैम्डा प्लस एम म्यू प्लस एन न्यू इज इक्वल टू 0. एन न्यू इज 0 इज इक्वल टू 0. एन न्यू इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड है ए एल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर plus c square n square is equal to n square k square, which we had written a square l square plus b square m square plus c square n square is equal to c square minus k square into n square is equal to minus k square into n square is equal to 0. This is equation 3 we marked, and the equation this is we mark as equation 5. और दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन नेचर. सो 2 वैल्यूज होंगी एलिमेंट की. मीन्स 2 सेट्स हैं ऑफ एलिमेंट. इसका मतलब फॉर एवरी लाइन which is denoted by x upon lambda is equal to y upon mu is equal to z minus k upon nu is equal to r. इस लाइन के लिए जो कि 0 0 k से पास हो रही है 2 टेंजेंट प्लेन्स हैं. For every line 2 tangent planes to the ellipsoid which intersect in the line which we have denoted by 4. So now we eliminate element n from equation 5 and 3. So a square l square plus b square m square plus c square minus k square into n square. In place of n we write from here
L lambda plus m mu upon nu and with minus sign, whole square is equal to 0. Now we open it and find out the values. So this becomes, we take L square common, and for L square this is a square. Then from here plus lambda square upon mu square, and then we have into c square minus k square. Next is m square terms, b square plus mu square upon nu square into c square minus k square, and then 2lm. It is lambda mu upon nu square minus k square is equal to 0. So this comes L square a square mu square plus lambda square c square minus lambda square k square plus m square mu square b square plus nu square b square plus mu square c square minus mu square k square plus 2lm into nu lambda mu into c square minus k square is equal to 0. Lambda upon nu into mu upon nu, so this nu won't be there. So now we assume that L1 upon M1 and L2 upon M2, these are the roots of this equation. So product of the roots is equal to L1 L2 upon M1 M2 b square nu square plus mu square c square minus mu square k square upon a square nu square plus lambda square c square minus lambda square upon k square. And we cross multiply gives lambda 1 lambda 2 b square nu square plus c square minus k square into mu square is equal to m1 m2 upon a square nu square plus lambda square c square minus k square. And this is equal to n1 n2 upon by symmetry we can write a mu square mu square plus b square lambda square. By symmetry we can write, because this term won't be there and this term
parallel to this a mu and b lambda. And it is given these tangent planes are perpendicular to each other. It means L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. So we add them and that will be equal to 0. So denominator we are adding b square nu square plus c square minus k square into mu square plus c square minus k square into lambda square plus a square nu square plus a square mu square plus b square lambda square is equal to 0. So we now collect terms of lambda. It is b square plus c square minus k square into lambda square plus mu square terms. So a square plus c square minus k square mu square into mu square plus a square plus b square into nu square is equal to 0. Now we eliminate lambda, mu and nu. Let's say this is 7. So eliminating lambda, mu, nu from equation 4, that is the line equation between x upon lambda is equal to y upon mu is equal to z minus k upon nu and equation 7, this equation. So in place of lambda, mu, nu we will put x, y and z minus k. So this becomes b square plus c square minus k square into x square plus a square plus c square minus k square into mu square plus a square plus b square into z minus k whole square is equal to 0. And this is we had to prove that this is the equation of cone. So example is, prove that the locus of points from which three mutually perpendicular planes can be drawn to touch the ellipse. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and z is equal to 0 is the sphere
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर is equal to a square plus b square. So this is equation of ellipse. We mark it 1 and equation of one of the three mutually perpendicular planes हम ले लेते हैं. One of the equation of one of the three mutually perpendicular planes let कर रहे हैं हम L1x plus M1y plus N1z is equal to P1. So this plane meets the plane z is equal to 0. This is equation 2. Plane 2 meets the so three mutually perpendicular plane ले लिए हमने and touch the ellipse. So ellipse ही है तो इसमें क्या plane है, ये plane है. So if this is the plane, this meets the plane z is equal to 0 जो कि ellipse की equation में है. So जब दो plane मिलते हैं then we get a plane in the line given by L1x plus M1y is equal to P1 and z is equal to 0. Z is equal to 0 वैल्यू रख दी हमने प्लेन की इक्वेशन में. Now if this plane 2, this one, touches the ellipsoid, it means touches the ellipse, then the line 3 will touch the ellipse. This is the line, equation of line. So if the plane 2 touches the ellipse given by equation 1, then the line 3, this is the equation of line, this will also touch the ellipse 1 in xy plane. If 2 touches 1, then equation 3 will touch the plane, touch the ellipse in the xy plane. So in the xy plane we are taking, and the condition for this will be a square L1 square plus b square M1 square is equal to P1 square. Same as we did in ellipsoid. यहाँ सिर्फ xy डायरेक्शन में है, z में नहीं है, so ellipse हो गया. 3D नहीं है, this is 2D plane है, this is plane. We said ellipse is also a plane. So P1 is under root a square L square plus b square M square. Now ये P1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write L1x plus M1y plus N1z is equal to under root. From here we are writing a square L square plus b square M square. और इसी तरह से बाकी के ये हमने 1 of 3 म्यूचुअली लिया है परपेंडिकुलर प्लेन्स. सिमिलरली फॉर अदर 2 वी कैन राइट L2x plus M2y plus N2z is equal to under root a square, here it will be L1 M1, a square L2 square plus b square M2 square, and for third L3x plus M3y plus N3z is equal to under root a square L3 square plus b square M3 square. अब इन्हें हम स्क्वायर करके ऐड कर लें
then we can write down in summation form. So we take this A, B and C. So A square plus B square plus C square, squaring and adding, we get x square sigma L1 square, because this will be L1 square plus L2 square plus L3 square plus y square sigma M1 square plus z square sigma N1 square is equal to, right hand side में भी square हो गया है, so under root won't be there. Here we have plus twice of yz के साथ sigma M1 N1 plus 2zx plus 2zx sigma N1 L1 plus 2xy sigma L1 M1 is equal to A square sigma L1 square plus B square sigma M1 square. Now we put sigma L1 square is equal to sigma M1 square is equal to sigma N1 square is equal to 1. So this is 1, this is 1, this is 1. Here also this is, and this is 1. And these terms sigma L1 N1 sigma N1 L1, this is M1, and again sigma M1 N1, these are 0. So इससे हमें रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूव करना था. थैंक यू.